Namaste everyone. In this video, I am going to explain the poem My Lost Pencil. I am going to explain in English as well as in Hindi. Okay? The poem name is My Lost Pencil. The poem My Lost Pencil is a short and humorous poem about a student who keeps losing pencils. The poet talks to the missing pencil as if it were a person and wonders where it has gone. Stanza 1. Oh, pencil! Dear pencil, where have you gone? I just had you here a minute at dawn. You were sharp and perfect, ready to write. Now you are missing, gone from sight. The speaker is looking for his or her pencil and asks where it has gone. Just a short time ago, the pencil was with the speaker. It was sharp, new and ready for writing. But now it has disappeared. कवि अपनी पेंसिल को ढूंढ रहा है और पूछ रहा है कि वह कहाँ चली गई। थोड़ी देर पहले ही पेंसिल उसके पास थी। पेंसिल तेज नुकीली और लिखने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रही है। डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, भोर या सुबह का समय। शार्प मीन्स हैविंग ए पॉइंटेड एंड और नुकीली। मिसिंग, मिसिंग मीन्स लॉस्ट और नॉट फाउंड, इसका मतलब गायब। साइट, what can be seen? In Hindi, it means दृष्टि या दिखाई देना. Okay? Now stanza 2. Did you roll off my desk? Did you fall to the floor? Did someone swipe you for sure? It's always the same. I have lost 50 this year. By the end of the month, they just disappear. It means the speaker wonders what happened to the pencil. Maybe it rolled off the desk and fell on the floor. Perhaps someone took it. Then the speaker says something funny. This happens again and again. He or she has already lost 50 pencils this year. By the end of every month, the pencils somehow disappear. कवि सोचता है कि शायद पेंसिल मेज से लुढ़क कर नीचे गिर गई होगी, या शायद किसी ने उसे चुपके से ले लिया होगा। फिर कवि मजाकिया ढंग से कहता है कि ऐसा हमेशा होता है। इस साल वह 50 पेंसिल्स खो चुका है। हर महीने के अंत तक उसकी पेंसिल्स गायब हो जाती है। इम्पोर्टेंट वर्ड्स, रोल ऑफ। रोल ऑफ का मतलब लुढ़क कर नीचे गिरना। ओके? फ्लोर मीन्स जमीन। स्वाइप मीन्स चुपके से ले जाना। डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना। नाउ स्टेंजा 3. नेक्स्ट टाइम I will tie you with tape or a string because losing my pencils is a real thing. It means the speaker has decided that next time he or she will tie the pencil with tape
or a string so that it cannot be lost. The speaker jokingly says that losing pencils is a regular problem for him or her. कवि सोचता है कि अगली बार वह पेंसिल को टेप या धागे से बांध देगा ताकि वह खो ना जाए। वह मजाक में कहता है कि पेंसिल्स खोना उसके साथ होने वाली एक सच्ची और बार बार होने वाली समस्या है। Now see the important words. टाई मीन्स व्हाट? बांधना। टेप मीन्स चिपकाने वाली पत्ती। स्ट्रिंग मीन्स धागा। ओके। रियल थिंग मीन्स सच में होने वाली समस्या या बात। The main message is the poem is a humorous poem about a common problem faced by students, losing pencils. The speaker keeps losing pencils and humorously imagines different reasons for their disappearance. Finally, the speaker decides to tie the pencil with a string or tape so that it cannot be lost. यह कविता विद्यार्थियों की एक सामान्य समस्या पेंसिल खो जाने का मज़ेदार तरीके से प्रस्तुत करती है। कवि बार बार अपनी पेंसिल्स खो देता है और मजाकिया ढंग से सोचता है कि वे कहाँ चली गई। अंत में वह तय करता है कि अगली बार पेंसिल को धागे या टेप से बांध देगा। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, comment, subscribe to my channel, My Voice Life Skills. Okay, so what is the lesson we have learned from this poem? We should take care of our belongings and keep them safely. Okay, my dear students, we should always take care of our belongings. Okay, the poem makes us laugh while showing us a very common problem, losing our pencils and other stationery, right? Okay, bye bye, namaste, take care, see you in the next video. Okay, thank you.